Familiar figures. 800 million people of India live in rural areas. What does it mean for 800 million people to wait for water, electricity, roads, jobs? Lack of opportunity has driven migrants against their will from villages to urban centres. More than 400 migrants reach just New Delhi every single day. गांव में अगर काम मिल जाए तो गांव की खुशी यहाँ पे नहीं है। जो गांव में हम लोग खुश रह सकते हैं, सो यहाँ खुश नहीं रह सकते। A basic response can change rural India. It is not about having an aspiration. It is the fundamental human need of people to have a basic road. The wait for everything has been long in villages like Kalyana Khurd, and disbelief has become intrinsic to rural thinking. Even until the year 2000, almost 40% of India's villages had no all-weather roads. अभी हमारे गांव में कोई ना तो करियाना दुकान के ना कोई एसटीडी व्यवस्था कશું જ हमारे गांव में નથી बराबर हमारे रात में कोई भी बीमार થઈ જાય કઈ भी એવો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય તો અમે અહીંથી કલ્યાણ જઈએ તો અમને કઈ વ્યવસ્થા થાય અહીંયા આ ગામમાં કોઈ વ્યવસ્થા થાય એવું નથી. From the year 2000, the fate of villages like Kalyana Khurd was set for change through the Government of India's PMGSY program. Over 370,000 kilometers of new rural roads will be constructed for nearly 180,000 villages across India. The World Bank is supporting this program through the Rural Roads Project in select districts of 4 states. The partnership has enabled establishing innovative planning and implementation guidelines. Community participation and transparency is maintained right through the project. A big change from development projects of the past. K.S. Thakur, an engineer with the Himachal Pradesh State Public Works Department, is in village Panrasa. अपनी सहमति रजामंदी दे देंगे अलाइनमेंट के बारे में रजामंदी तभी इसकी हम डीपीआर बनाएंगे और तभी ये अप्रूव हो पाएगी. A core network of rural roads was drawn up for every district of India. Based on that, detailed field surveys are carried out for every road. Junior engineers like Lalit Kumar are in top gear as excavation begins on virgin land. At every stage, he refers to various manuals to guide him for strict standards of practice, including norms concerning environmental issues. Construction is underway, and the people of village Samahani are intensely engaged and excited about their future. जमीन का हमें कोई दुख नहीं है जी, बस जमीन ये ना किसी ने नी है ना किसी ने लेनी है. सड़क से हमारी अगली औलाद भी देखेंगे भैया है कुछ. जो है मतलब हमारा भाग्य जो है ना वो मतलब सड़क से जुड़ जाए ना तो हम हर तरह से खुशी है उसमें. Kolaram is one of the many people in village Samahani who have donated land for the road. इसको तो जी सभी फायदे हैं. गाड़ियाँ इधर से चलेगी, अगर पानी की किल्लत होगी तो पानी की गाड़ियाँ चलेगी, सब्जी की गाड़ियाँ चलेगी, गैस की गाड़ियाँ चलेगी और हर तरह से बसें चलेगी जी. उनके पढ़ाई वगैरह के लिए आराम से गाड़ियाँ लगेगी, यहीं से जाएंगे बच्चे. पहले तो बहुत कम मतलब पढ़ते थे क्योंकि लड़कियाँ खासकर लड़कियों के लिए मुश्किल होती थी, दूर कहाँ भेजना. तो अब तो यहीं से गाड़ियाँ जाएगी, यहीं से बस में बैठेंगे. अपनी प्राइवेट रख सकते. गल की 8 बजे यहाँ से लेने, शाम को 6 बजे यहाँ पहुँचा देने जी. रिश्ता भी नहीं करता था जी कोई भी. इधर रिश्ता करने को मना करते थे भी यहाँ तो रोड नहीं है, अभी आदिवासी टाइप है, यहाँ क्या रिश्ता करना.
Far away from the Himalayan terrain is the arid desert state of Rajasthan, where rural road construction is in full swing. In a single district of Udaipur alone, more than 200 kilometers of roads have been built in just 1 year. Rajasthan is attracting attention due to many examples of best practice, especially for efficient management, good quality and transparency in implementation. Rural road construction is now a mega program. Constructing roads is an expensive business. Depending on the terrain, 1 kilometer of road under PMGSY can cost from 50 to 125,000 US. That is 1.5 to 4 million Indian rupees. The outlay for the PMGSY program is 33 billion US. At such costs, rural roads cannot be viewed in terms of profit. The Rural Roads project is guided by an environmental code of practice that is an intrinsic part of designing and construction. A lot of what was put down as standard practice in the manuals is now a natural part of the process. Private contractors with their engineers are in regular contact with engineers of the implementing agencies to ensure that work progresses according to technical standards and local needs. शुरू में प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चला, उसमें जो हम लोगों को कहा गया कि काम कैसे करना है और सब लोग क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस हो गए, तो नेचुरली उससे ये बदलाव आया। डिपार्टमेंट भी चाहता है अच्छी क्वालिटी, मैंने ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट नहीं चाहता है। और जो एजेंसी है टाइम टू टाइम इनके मॉनिटर्स आ रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का नहीं था पहले पता, यहाँ बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, तो बड़े प्रोजेक्ट के आने से और एक तो फंडिंग की वजह से हो रहा है सब, कि पूरी फंडिंग आ रही है तो काम भी फिर अच्छा होगा। और इसके बारे में जो वर्कशॉप्स लग रही हैं और जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो नेचुरली उससे भी तो जो इससे आगे जो हम काम करेंगे इससे बेटर है। Various sites of new rural roads revealed stories about the immediate response of each community or individual to the newfound access. For Roshan Lal, building a new shop became the priority. The new 5-kilometer road linking the village to the nearest highway made it viable. एजुकेशन की तरफ देख लो, एग्रीकल्चर की ओर देख लो, किसी की तरफ देख लो, मकान बनाने की तरफ देख लो, हर चीज में बढ़ोतरी हुई। रोड निकलने से बढ़ोतरी हुई गांव में। जब से हमने एक ट्रॉली रेत की लानी होती थी, उसको वहाँ रोड में फेंकना है, तो वहाँ से पर घोड़े का 20 रुपये किराया आ जाता था हमें। तो एक ट्राली का कम से कम 400-500 तो नॉर्मल खर्चा आ जाता था मतलब। अब तो कैरेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो गाड़ी आंगन में आती है। कम कैरेज पड़ा हमें। अगर 50,000 लगना होता तो वहाँ लगना था 1 लाख, इतना फर्क पड़ गया। रोड निकलने से आज 1 लाख रुपए बीघा होगी, 50 के सीधा 1 लाख के थी, जो इतना फर्क हुआ रोड निकलने से। ये यहाँ रोड नहीं निकले होता तो जंगल था यहाँ पर। Johar Valley is one of the most remote areas in this region of Himachal. People trudged 6 to 7 hours across steep mountain paths to reach the nearest roadhead for their simplest needs. The new 3.5-kilometer rural road, still under construction, is not only removing daily stress. Investments reflect the life people are looking forward to. Infant and maternal mortality rates have been high in remote areas like Johar. The roads will surely change that. देखो जी, यहाँ पर एक तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो ले जाना था डिलीवरी केस होता है ना जी, तो यहाँ पर लेडीज के वो पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता था। इससे जो है अब बहुत प्रॉब्लम थी वो हमारे।
कई जो ऐसे थे वो बेचारी औरत जो है ले जाते समय जो है ना जी मर भी जाती थी कभी कभी। उससे बहुत सहूलत हुई है हमारे की, क्योंकि बस में गाड़ी मंगाई करने ले गए, गाड़ी में हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। Miles away, Swarnakanta is busy. The new roads are changing her daily work experience. That will also be the future of Johar. महीने में एक बार हमारे टीकाकरण होता है, तो उसमें बच्चों की तादाद जो है अधिक आ रही है और गर्भवती महिलाएं भी आ रही हैं। ऐसे पहले उनको आने में दिक्कत होती थी। स्वास्थ्य केंद्र के संदर्भ में जैसे हमारे दूर दराज से महिलाएं थी वो इजीली हमारे पास जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में आ जाती हैं, और जो कई छोटे छोटे बच्चों को उठा के उनको आना पड़ता था, तो कई अब हमारे सड़क होने से बाइक पे और अपनी गाड़ी में भी लोग जो हैं टीकाकरण के लिए बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में लाते हैं और महिलाएं भी वैसे आती हैं। Back in the remote valley of Johar also lives Yugal, an educated young man who worked in the city. That was before. The new road has drawn him back to his village where he prefers to live. Yugal is the first to begin vegetable farming after the road came. It won't be long before others will follow him in growing cash crops. But, as Yugal explained, the coming of change is difficult to perceive right away. अगर हम सब्जी यहाँ से पैकिंग करके मतलब पीठ पर उठा के ले जा सकते हैं, तो जहाँ हमने बेचनी है वहाँ तक तो जूस निकलेगा ही निकलेगा उसका। नहीं बंदा कर सकता वहाँ, फिर उसका दाम अच्छा नहीं पड़ता है, दाम अच्छा नहीं बनता है और लोगों का रुझान घट जाता है, नहीं करना है। अब सड़क पहुंची है, लोग घर घर से मतलब 2 पेटी हो 2 डाल दी बस में और भेज दी। Yugal is looking ahead to more. He's convinced his village will be quite different in a year's time. He has heard and seen what roads do. Far away, village Ranj reflects the prosperity Yugal foresees. बिना सड़क के तो इंसान की वैल्यू कोई भी नहीं है, जीरो है। सड़क के बिना तो आदमी बिल्कुल लंगड़ा है। अगर पैदावार हम ज्यादा करेंगे, सड़क ना हो तो फिर उसको कैरेज ढुलाई मुश्किल हो जाएगी। यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर ही हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अब ऐसे सड़क की सुविधा होगी ना हमारे को, तो इसी से सहूलियत होगी। यही जीप आती है, यही हमने उसको लोड करना माल को और सब्जी मंडी। तो अब हम 3-4 किलोमीटर माल भेजते हैं यहाँ से। हमारा पूरी बेल्ट यहाँ से पूरा गांव ही कवर हो गया है। वो पूरी टोटली सब्जी सारी। पहले मैंने लगाई सब्जी, फिर मेरी देखते कि मैंने औरों ने हमने जैसे समूह बन गया को विकास का। A huge constituency of rural people is beginning to hinge their lives and future to the road. They can immediately see the dynamic connection between the village and the local market and highway. People are grabbing the opportunity for selling at better prices. A parallel momentum of growth has already begun. Transportation is the natural first visible effect on the new road. The rapidly increasing number of passengers is a phenomena in itself. Cutting across age and gender. Everyone wants to get onto a vehicle that can carry them from the village to their destination. School, big hospital, workplace. It was just 3 months ago that Mahinder Singh started plying his vehicle on the new rural road. Within this short time, he says, the daily number of passengers has increased 4 times. Most of his passengers are daily wage labourers, keen to have a regular cash flow. For Mahinder, the economics is simple. A growing demand from labourers and increased earnings for the transport supplier.
People come from the village to the highway point in one vehicle, proceed ahead in another. For them, the point is, now they can easily return home the same day. Many daily wage labourers said they don't mind taking the chance now. Earlier, the difficult paths often discouraged them from making the effort to look for work. It's an unbelievable experience for the people of Merukagura to see a 3-kilometre road passing through their once slushy land. Like elsewhere, many of them have willingly donated land for the road. हम लोग जंगल में पड़े थे आज दिन तक, किसी को ये पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, काश्तकार भाई लोग क्या कर रहे हैं। और आज ये रोड बनने से धीरे धीरे हम लोग भी इस दृष्टि पे आ रहे, हम भी इंसान बनेंगे आपसे से। मवेशी की तरह दिन निकाल रहे, नहीं कोई पूछता था, नहीं कोई समझते थे, नहीं हम शहरों की कुछ बातें सुन सकते थे, नहीं कोई शहरों में राज रिवाज था वो हम समझ सकते थे। अब हमें ये थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा रोड से कि जाने आने में एक दूसरे से मिलाव रहेंगे, कि अपने गांव में धीरे धीरे उजाला हो रहा है और हम लोग भी धीरे धीरे इंसान बनेंगे। हम हमारी औलाद को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, इनको बाहर आने जाने में ये घूमेंगे तो इनको भी रीति रिवाज पता लगेगा कि वास्तव में इस दुनिया में क्या हो रहा है। Nearly 45 million people have already benefited since the PMGSY program started. Road rollers and many well-trained and often highly motivated engineers are paving hope into the villages. वर्क तो हम जानते थे, जो टेस्ट हम जानते थे, थ्योरेटिकल हमने सब सीखा हुआ है, प्रैक्टिकल भी हम करते थे, पर ये जो बड़े बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल बराबर हमारे को करने को मिल रहा है। और हर 6 महीने हमारे इस वर्ल्ड बैंक वाले आते हैं और हमारे ट्रेन करके जाते हैं। हर 6 महीने के अंदर हमारे कार्यशाला लगती है, हमारे जो वैज्ञानिक आते हैं, हमारे जो बाहर से चीफ इंजीनियर आते हैं, हमारे को ट्रेन करते हैं किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से अर्थ को कॉम्पैक्ट करना चाहिए, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में कठिनाई आएगी और किस किस तरह से आप इनको इस तरह से सुलझाओगे। ये सब हमारी कार्यशाला के अंदर हमारे को 3 दिन की कार्यशाला होती है, हर 2-3 महीने में जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि इतने बड़े बड़े ब्रिजेज, इतनी बड़ी हिली टेरेन की रोड बनाने का कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता था, तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जहां तक कंट्रैक्टर की बात करें, कंट्रैक्टर जो डी क्लास के कंट्रैक्टर थे, जिसके पास की छोटी मोटी मशीन भी नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास आप देखेंगे जेसीबी, हिटाची, बहुत बड़े बड़े एक्सकवेटर मिलेंगे, वाइब्रमैक्स मिलेंगे, ग्रेडर मिलेंगे। जैसे हमारे कंट्रैक्टर महोदय, ये ऑलरेडी अभी 5 साल पहले ये सी क्लास कंट्रैक्टर थे, अभी ये AA क्लास कंट्रैक्टर हो गए। कोई भी हमारा फील्ड के अंदर दिक्कत आती है तो हमारे जो सीनियर हैं उनको जाके पूछते हैं, तो हमको गाइड करते हैं। हमारे जो अधिकारी ऊपर वाले वो बराबर हर 15 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और जो कमियां होती हैं हमको बताते हैं, हम उसको बराबर मीट आउट करने की कोशिश करते हैं। Assured funds have ensured a continuous momentum of construction, and that has had its own impact on the project. There are pressures on performance at every level, not just for timely work, but quality work. Apart from transparency, maintaining standards has been a critical element. The Rural Roads project enabled this through strengthening equipment and testing facilities at all levels. Each material used for the road is tested in field and district level labs. It doesn't end there. Engineers are required to go back to check the material used in each layer of a finished road. Later, further tests are conducted through state and national quality monitors. Each morning, the bare life of a poor family unfolds in rural India. Until now, the chance that their images and voices would be seen or heard in the world was a remote possibility. The rural road is changing that and much more. Now, even the smallest amount of produce has a chance for income. Every morning, it's just a little milk from his buffalo that Kakulal gets. But he now gets a good price for it, since the effort to carry it across on the road is no longer a tiring prospect for him.
the silent multiplier effect of rural roads is becoming visible only as they get completed. These rabaris are nomads. Even they are taking the benefit of a milk cooperative with a cold storage that is a gift of a new rural road. They are not the only ones. This cooperative offers a better price for milk than tea shops in the neighborhood. With the road, the number of milk sellers has increased. And, simply speaking, the local people get a good price and the cooperative is a successful venture. It's examination day. Sadhna has driven over 20 kilometers from the city to the village school. More than 6 kilometers of that is the new rural road for village Dedkia. सड़क नहीं थी तब तक कोई महिला शिक्षक थी नहीं यहाँ, कभी ज्वाइन ही नहीं किया, हिम्मत ही नहीं कर सकती है क्योंकि यहाँ आने जाने के और साधन नहीं है। बिना व्हीकल के तो कोई टीचर आ ही नहीं सकती और सड़क नहीं होती तो कोई टीचर आ ही नहीं सकती थी, लेडी टीचर। इधर जो बैकवर्ड एरिया है, इधर पीछे सड़क नहीं बनी हुई, बच्चे 1.5, 2, 3 किलोमीटर से पैदल आते हैं। वो बच्चे इतने थक जाते हैं कुछ नहीं कर पाते, और जबकि इधर वाले बच्चे फटाफट आ जाते। सब लड़कियां पढ़ रही है गांव की, एक भी लड़की ऐसी नहीं है कि जो 8th में पढ़ने लायक है और घर पे बैठी है। The principal, V.S. Shiktawat, also said that he accepted a posting to the school only after a road came here. तो अब इस सड़क की वजह से बच्चे बिल्कुल नियमित हो गए, आने जाने में उनको तकलीफ नहीं आ रही, तो स्टाफ भी बिल्कुल नियमित हो गया और यहाँ के पब्लिक आम जागरूक हो गई कि भाई हमारे विद्यालय समय पे चले, समय चले। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सड़क से होगी, पब्लिक में एक जागरूकता आई। Roads are bringing confidence to rural voices. They are looking at the road as the route to resolving problems of health, agriculture and education services. People are also wondering about more connectivity. Why can't we link two roads? When will the gravel road be made a tarred road? Who will look after the roads? जो भी अधिकारी आता है कहता है रोड नहीं है, क्या रोड पहले हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, रोड आगे भी होगा। People are thinking ahead as fast as the road coming into their village. जो रोड मतलब यो कालीवाल से यो पिपलिया से रात में बन जाए। The question is, are systems geared for the challenge of a changing rural India? हाँ तो कुछ तो सही, कुछ तो व्यवस्था चाहिए कि पानी में पड़ता पड़ता तो जाता जाता तो कोई ढीलावरी है, कहीं ढीलावरी वाले चढ़ी दुके ना पे ए भाई बोला जो गाड़ो हो जाओ बूढ़ा हो जाओ तो अटेरे ना में ये बते मोबाइल भी आ गया अटेरे बैठ बैठ फोन का आफर कर तो आफर मैडम ने बुला मैडम जप्पू को गटे कर तू जप्पू तमें बे ना ये तो कुछ तक है एम। And it's not about aspirations, but about fundamental needs. That's the bottom line.